be starting with the first question, which is soccer. Okay. So this is actually a pretty simple question. What they've asked us that there are two teams, team 1 and team 2. So this is team 1 and this is team 2. And this is the goals they have scored. Okay. So there was this person. What has he been named? So this Dima person, they want to know. So they were watching this game, and when they were watching, they saw that this was the score. For some reason, they had to do something else, so they saw that the score got updated, like x1 comma y1. It became something like this. This was like the new score. Now he is concerned whether at any moment of time there was an equalizer, like like in the from this time to this time, he wants to know if for some x prime comma y prime, x prime was equal to y prime. Is that okay? Is the question clear to everyone? Okay. So the code is pretty simple. I'll show you my submission. So basically what you have to observe is either this one, like the first goal became greater than this one, or this became greater than our this one. Okay. So we just have to check if that is true or not. So how can we check it? This is just like the simplest thing that you have to do. If your x1 was like your initial x was less than your y, and your new, let's say we are calling it x1, is greater than your new y1. What does that mean? That at some point x prime was equals to y prime. Is that okay? Then we will print no. And the same complementary case, rather like y was less than x, and in the new score you find your y prime was greater than x prime. So this definitely crossed, like there was some kind of intersection. So again you'll print no. Otherwise you'll print yes. Let me take an example of a yes no. Uh, for no, let's see, 1, 2, or 3, 2. Which one? Okay, so let's take this one, the fourth test case, 1, 2, and 4, 3. So you had 1, you had 2, and when he checked again, it was 4 and 3. So initially, our x is smaller than y. What is happening here? Your x prime, this is greater than your y prime. So what could have possibly happened? Let's say maybe this code, like the score went like 1, 2, then it became 1, 3. Then they scored another, then they scored another. So you see, there was this overlap here where the scores were equal. So you will print no. Otherwise, you will print yes. I hope that is clear with everyone. It's clear?
If you guys are facing any issues, you can like tell us. Okay, it's clear, right? And this was the implementation of it. This was my implementation of it, just like 3 4 lines. You just check this condition that I've said, and like you will get your answer. Okay. So this was the first question. If any of you like, what mistakes were you guys making? Can you like tell us? Like, I think only Solanki solved the first one, right? Uh, yeah. Okay, sure. So I hope your doubts are clear. We'll be moving to the next question. And the next question was pretty tricky, I would say. Let's go back here. Yeah, a lot of people solved it, but like still. So what we have been told is you have been provided with like a x, and you have been provided with a y, and this is k. K is the number of operations. Okay. So what we are told is we have to provide a final value of x. What are the operations that you can take? Either you will add 1 to it, like you can add x plus 1 to it, or if x divisible by y is true, like this is true, you can divide it. And the total number of times you can do this is k. Is that clear? The question, everyone? Okay. So what we want to know is we want to know the final value of x, and we want to like minimize it kind of, right? Like there isn't much more to minimize of it, but like I'll explain it with my code itself. Just have to actually just implement what they've asked you to. Okay. So first you'll check is what is the remainder? Like if you divide it by y, what is the remainder that you will get? So that will be the number of times you will have to add 1 to it, x mod y times. This remainder, if you add to x this many times, you will have something that is divisible by y. So like that is our target as has been mentioned here. One second. First x plus plus, k minus minus, then if x mod y, x equal to x. Okay, like that is the basic logic. Like you don't have, it isn't very difficult logically, but it is more difficult like in the implementation part. I think like the code was pretty long. Some people were able to do it in like a sh- smaller lines of code, but like this was how I went with it. So basically, this is the number that you have to add to make your number. Basically, your what should I say? X divisible by y. Like that is our main goal actually. Okay. For example, if you had to make this divisible by 3, you will have to add 2. So 16 mod 3, that is 16 mod 3, you will get something like 2. You add it to here. So you will need 2 operations. And when it becomes 18, you will just divide it. And you'll get 6, maybe if your k is equals to 3. Otherwise, your value will remain as 18. Okay. So that is what we have to do. So where is my summation? Yeah. So what happens is if your like remainder, y minus remainder, it's basically like I am trying to, how should I put it? Check how can I like divide it. Okay. So how many steps do I actually need? For example, if your k, like the number of operations is less than the remainder. For example, if your k is equals to 2 and you have something like
Uh, what should we go for? 17 mod 4. Suppose you have this as x and this as y. How many operations do you need to make this divisible by 4? So that will be three operations. You add plus 3 and you'll get a 20, and 20 is divisible by 4. Okay. But since we have k equals to 2, what will be the answer? It will be 19 because you can't do much more than that, right? So that's the first case. So I'll just output this one. What happens if your remainder is equals to k? So what you will do is, like this extra part, what you'll do is you'll add this many steps to it. Like your remainder is suppose 3. Okay. So you add it and you'll get 20. Okay. And then what you'll do is, while this is true, you just like keep dividing it. Yeah. So basically, how can I put? So what will happen is, for example, if you have something like this, you can like represent it as like a y number system. For example, if you write 332 as in powers of 10, so you will have 3 into 10 square plus 3 into 10 plus 2 into 10 to the power 0. So what we can actually observe is we are trying to write x in like y number system, and that remainder y minus remainder is like helping us do that. Like you can write on this, I think. It's basically the number of steps you actually need. Like y is your remainder, right? So if I subtract this, because I cannot subtract like from x, the only operation that is available to is addition. So I'll just like subtract it by this many steps, and you'll get this. Okay. You can like check it with some test cases, right? Like instead of adding x plus remaining, I'll just add like subtract the extra part from y. Okay. So what we'll do then next? Yeah. So while this is true, like the number of steps that you can take is this, you can like shift it by this much and you can divide it while this is true. Okay. And this will be your final result. And you can just continue, like you have gotten your result, you can continue this. Now, if either of these cases are not true, for example, if your steps that you can take is greater, what you'll do is you temporarily assign the number of steps that you need to take. If x equals to 1, then you cannot do anything. Like, what can you do with x equals to 1? With x equals to 1, there will, like, this will be our actual final case, like this area. Okay. So what will happen is, if x equals to 1, you have like reached the end case. Like, if you follow these steps, if your number of operations is greater than like a requirement, what you'll do is you remove this operation and you add this remainder to it. Okay, like this is your remainder, right? So if you add it to it, this becomes divisible. Okay, and while this is divisible, we'll keep dividing it by y. Now we'll check what is the remainder. If we can take it off, we'll remove this remainder from y to make it divisible by like to make this expression divisible again. Otherwise, if you find that your k is greater than than your like remainder, the steps you require, your answer will just be the addition of it, and you'll run out of k, and then you can break your statement. If you find at the end that your k is still greater than 1, like for example, you have some 1, 2, dot till let's say y minus 1. Like that is the remainder you'll get, right? If x mod
Why? This is like the range of remainders. Everyone agrees with that, that this is like the remainder. Yeah. So this is like the range of remainders, and your k is still greater than this. Like after all the operations, you have a k, like the number of operations that you can take is still greater than like your, like this is still true, right? From our code, this is like still true. We have some value of k that is not zero yet. For example, we haven't reached this stage. We didn't have to reach this stage, or we didn't like this didn't become zero at any stage. Okay. So what we'll do is we'll just take y minus will like this will become 1 again, right? If you add 1 to this just resets, right? For example, if you have something like y greater than y minus 1, if you take some remainder, it will just like loop here only. So for that, you just have your case your number of operations that are still left, and this is the remainder that you have, plus the one step that you have to take to clean this because of this shift. Like if you have 0, 1, 2, you'll move here. This will be like the final case. Otherwise, there are no more operations, so you don't have to add anything to it. So that will be just your x. Okay, for it will be actually the answer for this one. So you actually this one is better if you can like go through some of these examples. For example, 1632. Let's see if we can do this. 1632. It will be too long, I think. What is the time? Actually, numbers C can also be we'll have to discuss C as well. We'll be sharing the codes in the group, so you can go through it. And if you face any issues, we can like discuss it again. Okay, because it's already 11:30. We have to discuss C as well. And if we have time, we'll like discuss 1632 wala example as well. Is that fine with everyone? Okay, so number C will be taken by Ashish right now. So we'll take some questions at the end. Okay, I'll stop sharing my screen. ठीक है, आवाज आ रही है क्या? एक रिस्पॉन्स कर दो। आई थिंक क्लियर है। ठीक है, तो सी क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन में कहा था कि तो क्वेश्चन में तो स्टोरी है, तो मैं बता रहा हूँ सर। तो फर्स्ट से तुमको ऐसे एलिमेंट चूज करना होगा। कितना भी एलिमेंट चूज कर सकते हो, और जो एलिमेंट होगा उसका सम निकालना होगा। सम तुम्हारा जो एल और आर है, एलिमेंट तुम्हारा 3, आर तुम्हारा 10, तो उसके बीच में लाई करना होगा। अगर ये लाई कर रहा है तो तुम्हारा काउंटर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा 1 1 से। तो जैसे ये सम, तो अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, हाँ तो फर्स्ट एलिमेंट लेंगे जैसे सम, तो हम लोग फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, सम हो गया 2, और कंडीशन गिवन है कि एल लेस देन इक्वल टू सम, लेस देन इक्वल टू सम, एंड लेस देन इक्वल टू आर। ये अगर लाई हो गया तो हमारा एक काउंटर हम लोग कैरी करेंगे, काउंटर इक्वल टू 0। तो फर्स्ट सम तुम्हारा 2 हो गया, तो ये तुम्हारा लाई नहीं कर रहा है 3 और 10 के बीच में। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अगर सम पहले से 2 था और नेक्स्ट एलिमेंट ले लिए 1, तो ये 3 हो गया। तो ये देखो
ये कंडीशन तुम्हारे सेटिस्फाई हो रहा है 3 और 10 के बीच में, तो ये इस बार काउंटर जो है, काउंटर तुम्हारा 1 हो गया। तो हम लोग दो, फर्स्ट हम लोग एक एलिमेंट लिए तो उसमें सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो दो एलिमेंट लिए 2 और 1। तो ये अगर सेटिस्फाई हो गया तो काउंटर इंक्रीज हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे 11। तो मतलब जो उसके बाद सब, जो 2 और 1 थे वो डिस्कार्ड कर देंगे, उसको नहीं लेंगे। तो एक बार 11 अगर ले लिया तो सम हो गया तुम्हारा 11। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कैच है। तो ठीक है, तो काउंटर क्या होगा तुम्हारा 1 ही रह जाएगा। और नेक्स्ट बार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम हम लोग यूज करेंगे 2 पॉइंटर। और टू सेकंड जो फर्स्ट पॉइंटर होगा तुम्हारा, ये सम कैलकुलेट करते टाइम, ये 2 2 + 1 11। एंड सेकंड पॉइंटर होगा जो हम लोग को ये डिस्कार्ड करते टाइम, जो अगर ये 11 हो गया तो तुम्हारा ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 11 जो है उसको डिस्कार्ड कर देंगे, नहीं लेंगे। तो डिस्कार्ड करने के बाद सम हो गया तुम्हारा 0। और हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे चले गए 3 पे। तो ये 3 हो गया। तो ये देखो किस सेटिस्फाई कर रहा है, एल और आर के बीच में है, तो काउंटर इक्वल टू 2 हो गया। नेक्स्ट बार फिर से सम इक्वल टू, पहले क्या था 3, नेक्स्ट एलिमेंट ले लेंगे 7। तो ये तुम्हारा 10 हो गया। 10 अगेन देखो सेटिस्फाई कर रहा है, सो इंक्रीज द एलिमेंट इक्वल टू 3। तो इसका आंसर भी देखो 3 होगा। 3। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। तो हम लोग अप्रोच क्या करेंगे, तो ये तो दो दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, बाइनरी सर्च 2 पॉइंटर। हम लोग 2 पॉइंटर से करते हैं। तो फर्स्ट एक पॉइंटर जैसे बताया कि ये तो सम कैलकुलेट करते टाइम होगा कि 2 ऐसे 2 + 1 11 0 3 और 10। और सेकंड पॉइंटर जो होगा हम लोग डिस्कार्ड करते टाइम। तो ठीक है, मैं कोड दिखा। देखो, हाँ ये तो इनपुट हो गया तुम्हारा, ये काउंट सम काउंटर काउंटर हो गया, और ये सम और 2 पॉइंटर का जैसे बताया कि जे एक काउंट पॉइंटर हो गया जे, एंड 1 हो गया आई। तो आई से हम लोग सम कैलकुलेट करेंगे, और बस वो जो डिस्कार्ड करने वाले थे, डिस्कार्ड करने के लिए हम लोग ये कंडीशन यूज करेंगे। और कंडीशन क्या होगा, कोई भी टाइम हम लोगों का सम, जो हम लोग सम कैलकुलेट कर रहे हैं, आर आर मीन्स जो हाईएस्ट वैल्यू दिया है उसको डिस्कार्ड नहीं होना चाहिए। तो अगर उससे ज्यादा हो गया तो हम लोग स्टार्टिंग से, मतलब बिगिनिंग से हम लोग माइनस करते जाएंगे। तो जे का वैल्यू जो होगा हम लोग माइनस करेंगे, और टिल जे प्लस प्लस। हाँ, ये भी एक कंडीशन है कि जे माइनस आई होना चाहिए, और जितना दूर तक ये तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है उतना तक माइनस होता जाएगा। ठीक है, ये और ये तो नॉर्मल तुम्हारा गिवन कंडीशन है कि अगर सम तुम्हारा इस रेंज में लाई कर रहा है तो काउंटर इंक्रीज हो गया। और ये भी गिवन है, उसके बाद सम तुम्हारा 0 हो जाएगा। और हम लोग ये एडिशनल ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को 2 पॉइंटर अप्रोच फॉलो करना है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल देखो, हम लोग ये चेक करेंगे कि माइनस कहाँ से करनी चाहिए। जैसे हम लोग 2 और 1 को ऐड करके 3 हो गया तो वो तो ठीक है, तो वो तो ऐसे भी वही डिस्कार्ड करने के, 2 और 1 डिस्कार्ड करने के लिए हम लोग ये जे इक्वल टू i+1 कर रहे हैं। और जो 11 है, ये जो है, ये निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे अप्रोच लगा रहे हैं, ये जे प्लस प्लस और माइनस बी ऑफ जे माइनस कर रहे हैं। तो इससे तुम्हारा फर्स्ट तुम्हारा ये जो जे इक्वल टू i+1 फिक्स हो गया तुम्हारा यहाँ पे, इतने इतने में। उसके बाद जो 11 मिला, ये कंडीशन लाए हो रहा है, तो उसके बाद हम लोग माइनस बी ऑफ जे कर रहे हैं, तो जे प्लस प्लस हो गया। तो 11 भी निकाल गया। तो उसमें 0 ऐड हो गया, फिर 3 पे काउंटर इंक्रीज, और 3 और 7 10, तो फिर इंक्रीज। तो ये अप्रोच, ये तो नॉर्मल कोड हो गया, बस तुमको ये सोचना था कि कैसे हम लोग निकालेंगे एलिमेंट अगर ज्यादा हो गया सम से, तो ठीक है, समझ गए क्या?
वन और क्या था, थ्री, सेवन। ठीक है, तो आई देखो, मैं बता रहा हूँ फिर से। आई इक्वल टू जीरो है, उसके बाद जे भी जीरो, और सम क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू टू। ये और अगर ये टू देखो तुम्हारा एल से कम है, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, फिर कंटिन्यू हो जाएगा, ऐड हो जाएगा फिर से। तो वन ऐड हो गया, ये थ्री हो गया। यहाँ पे तुम्हारा आई देखो और जे देखो, इक्वल टू आई प्लस वन हो गया, मतलब तुम्हारा जीरो वन, तो यहाँ पे टू हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं, और ये तो जीरो करना है, कंडीशन पे लिखा है इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और सम इस बार जीरो हो जाएगा, तो 11। इसमें देखो वाइल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो सम जो है, सम से तुम्हारे पी ऑफ जे माइनस होगा, सम से माइनस वी ऑफ जे, वी ऑफ जे की जे कितना था, टू, तो वी ऑफ जे कितना हो रहा है, जीरो वन टू, तो ये 11 माइनस होगा, ये जीरो होगा फिर से। जे कितना है यहाँ पे, ये बता जी कितना होगा। ठीक, ठीक है, फिर से सम कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, थ्री, ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो जे इक्वल टू जीरो वन टू थ्री, तो जे इक्वल टू फोर हो गया, और सम फिर से तुम्हारा 10 हो गया, तो जे इक्वल टू फाइव। और इसके बाद अगर ये कोई एलिमेंट रहता है, ये 15 है, तो सम देखो आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, 25। तो जे तुम्हारा फिर से माइनस हो जाएगा, और कुछ सेटिस्फाई नहीं होगा, काउंटर सेम रहेगा, मतलब काउंटर इक्वल टू थ्री होगा। ठीक है, और डी का क्वेश्चन तुम्हारा नंबर थ्योरी का है, थोड़ा टफ है, लाइक कॉन्टेस्ट ऑन गोइंग पे तो 600 सबमिशन था, तो ऐसे समझ सकते हो, टफ है बस। कोई डाउट सी पे या बी ए पे कुछ। ठीक है, इतना ही सॉल्व करवाना था, तो रैप अप करते हैं नेट। अरे कितना बनाए हो ये बता तुम लोग, कौन कितना सॉल्व किया। सोना, 400 सही हो बस। अरे तो अरे एक्सेप्टेड माना जाता है ना, तुम चार करो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर, एक्सेप्टेड होना चाहिए। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना क्वेश्चन, दो मटेरियल। ठीक है, देखो बी क्वेश्चन से तो सी क्वेश्चन इजी था तुम्हारा। अगर तुम लोग टू पॉइंटर अप्रोच मतलब आता है ना, थोड़ा सा भी आइडिया, तो तुम्हारा सी का क्वेश्चन हो जाता है, और ये तुम्हारा बी का क्वेश्चन थोड़ा ये था, कंफ्यूजिंग। हाँ हाँ, तो अब सॉल्व एक क्यों करोगे, अब सॉल्व भी करना है तो एक क्यों, ठीक है। आप सॉल्व तीन करना, जितना डिस्कस हो गया उतना करना आप सॉल्व, और देने का ट्राई करना कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट कैसा गया ग्रुप में भी बता सकते हो। ठीक है, बहुत लेट हो गया, एंड करते हैं। और तुम्हें कुछ बताना। ना ऐसा तो कुछ नहीं है, बट लाइक
if you guys face any issues, you can ask us in हाँ the और group, फर्दर when कुछ you can, डाउट हो तो मेंटरशिप ग्रुप तो है उसी हाँ, में। मेंटरशिप ग्रुप या मेन ग्रुप कहीं पे भी लाइक मैसेज कर देना, कोई ना कोई तुमको तुम्हारा डाउट सॉल्व कर देगा। So, हम्म, and absorb today's contest, at least like B and C were pretty solvable actually. It हम्म। is possible it did not click during the contest, but like you can practice two pointer and implementation using that. So yeah, definitely go for that. अच्छा मेंटरशिप ग्रुप में क्या ग्रुप वन से कोई है क्या यहाँ पे? ग्रुप वन नहीं सर, ठीक है।